Good morning students. This is Roma. Welcome to ODI classes. Pilamane, aji ame SSB TGT ra Unit 3 Addressing Classroom Diversity. Okay, ता विषय डिस्कशन करिवा. Previous class रे मु तमरा Unit 2 ra concept with MCQ आनथिली. So today we will discuss Unit 3. Okay, everyone join first. Am I audible to all? Okay, then start. So, do you know what is addressing classroom diversity? Addressing classroom diversity कहले कौन बुझ पिला माने? Addressing classroom diversity means recognizing and catering different learning styles. Okay, different learning styles, cultures and need of a student in the classroom. गोटे पिलार क्लासरूम रे कौन कौन नीड रही तार कौन कौन दरकार अच्छी ठीक अच्छे आउ ताकू केते डिफरेंट लर्निंग स्टाइल माध्यम रे पढ़ा जाई परिबो तार कल्चर कौन ओके सो ताकू ने कि हमर एड्रेसिंग क्लासरूम डाइवर्सिटी गठित एटा गोटे कौन करे ना इट प्रोड्यूस ए इनक्लूसिव एनवायरनमेंट ओके एटा गोटे इनक्लूसिव एनवायरनमेंट को प्रोड्यूस करे ठीक अच्छे सो MCQ देखिए पिला माने addressing classroom diversity involves what using a single teaching method for all, tailoring instruction to varied learner needs, ignoring student backgrounds, focusing only on exams. Addressing classroom diversity को कौन involve करे ना using a single teaching method for all no tailoring instruction to varied learner needs एटा टिके टिके लागुची ignoring students background no focusing only on exams no so the correct answer is tailoring instruction to varied learner needs that means amaro जो विभिन्न प्रकार amaro स्टूडेंट माने अच्छंती गोटे क्लासरूम रे गोटे इनक्लूसिव एजुकेशन क्लासरूम रे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्नर अच्छंती सो तांकर नीड्स को नहीं कि एड्रेसिंग क्लासरूम डाइवर्सिटी टा गठन हुए ओके सो द करेक्ट आंसर इज बी व्हाट इज द करेक्ट आंसर बी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टीचिंग लर्निंग मटेरियल TLM कहले कौन बुझ TLM कहले कौन बुझ टीचिंग लर्निंग मटेरियल एग्जामिनेशन पेपर चैट मॉडल और ऑडियो विजुअल एड्स टीचर्स पर्सनल डायरी सिलेबस कॉपी TLM helps to introduce a topic in a classroom okay it helps a teacher for introducing a topic so TLM टा कौन चैट मॉडल और ऑडियो विजुअल एड हमर चैट रे जिवो मॉडल रे जिवो आ ऑडियो विजुअल एड्स रे कौन जिवो ऑडियो विजुअल एड्स रे हमर TLM टा आसी जिवो आउरी सब ऑडियो विजुअल एड्स अछि हमर ओनली विजुअल एड्स अछि ओके सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ TLMs आर देयर ओके Good morning, Subhasri. AV aids are used to. Do you know what is AV aids? AV means audio visual aids. Audio visual aids. Audio visual aids रा use टा कौन? दृश्य and श्राव्य. दृश्य श्राव्य शिक्षण सामग्री. तो आर यूज टा कौन पिला माने ना replace teachers support visual and auditory learning increase classroom noise limit student interaction yes so the correct answer is what the correct answer is support visual and auditory learning A means auditory audio and V means visual so
the support visual and auditory learning. Visual and auditory learning रे तमर कौन कौन आसी जिवो ना स्मार्ट बोर्ड आसी जिवो. स्मार्ट बोर्ड, कंप्यूटर, ओके, स्लाइडर, एगुड़ा सब आसी जिवो पिला माने. Both visual and auditory learning. Okay, it is used for both visual and auditory learning. So, using the context of the learner means what? Using the context of the learner means teaching without considering backgrounds, relating lessons to students' experiences and environment, focusing only on textbook content, using foreign language only. So, using the context of learner, it classroom diversity रे अच्छी पिला माने context of learner रा means कहना ना teaching without considering backgrounds, no, relating lessons to students' experiences and environment. Yes, relating lessons to students' experiences and environment is called context of learner. It is used for context of learner. Focusing only on textbook content, using foreign language only. So the correct answer is B. Inclusive education emphasizes dash segregating special needs to students. समस्तों को विभक्तिकरण करके शिक्षा देबा. नो, providing an equal opportunity for all learners. Yes, teaching only advanced students, ignoring diversity. So the correct answer is providing equal opportunities for all learners, both disabled children and mentally disabled children, or physical handicapped children and normal children, or gifted children studying in the same classroom. That is called inclusive education. Okay, so the correct answer is what? The correct answer is B. Which activity promotes self learning? आ भितरु को एक्टिविटी टा सेल्फ लर्निंग को प्रमोट करे? ग्रुप डिबेट्स, इंडिविजुअल असाइनमेंट एंड प्रोजेक्ट्स, टीचर लेड लेक्चर्स ओनली, होल क्लास डेमोन्स्ट्रेशन. सो व्हिच एक्टिविटी प्रमोट सेल्फ लर्निंग? सेल्फ लर्निंग को एक्टिविटी प्रमोट करे? सो सेल्फ लर्निंग माने पिला निजे निजे पढ़िबो. ओके, सो से कौन ना इंडिविजुअल असाइनमेंट आ प्रोजेक्ट आमर सेल्फ लर्निंग को कौन करे? प्रमोट करे. कहीं ना डिफरेंट प्रोजेक्ट माध्यम रे पिला बहुत किछि शिखि पारिबो. सो दैट इज कॉल्ड व्हाट? बी. वेरी गुड. Small group learning is effective for what? Small group learning is effective for encouraging competition among all, facilitating focused discussion or personalized attention, ignoring individual differences, reducing teacher involvement. कुआ पिला माने small group learning is effective for what? B. Facilitating focused discussion and personalized attention, encouraging competition among all, no, ignoring individual differences, no, reducing teacher involvement, no. So the correct answer is facilitating focused discussion and personalized attention. आमर ग्रुप डिस्कशन को फोकस करवा आउ कौन करवा? पर्सनालाइज्ड अटेंशन, निजर अटेंशन को आउरी पर्सनालाइज करवा. So that is small the effective of small group learning. The main goal of using varied TLM is to increase lesson length and address multiple learning style, complicate the curriculum, reduce student engagement. So the main goal of using varied TLM is to
address multiple learning style. What? No, address multiple learning style. आमे multiple learning style ले जमती पढ़े परिबा तार मेन गोल होची आमे TLM यूज करिबा. ठीक अछि. So the correct answer is B. Contextual learning improves. Contextual learning means contextual study. So see कौन improve करे? Memorization only, relevance and retention of knowledge, teacher's authority, classroom discipline. Contextual learning improves only what? No, relevance and retention of knowledge. Relevance और retention of knowledge. आमे परस्पर relevant study करिबा और retention of knowledge को store करी रखिबा. Okay, ताकू जिबा को दबा नहीं. So the correct answer is relevance and retention of knowledge. Inclusive classrooms require what? Uniform teaching methods for all, differentiated instruction and accessible resources, excluding diverse learners, strict discipline rules. कुआ पिला माने what is inclusive classroom कौन require करे? Inclusive classroom कौन require करे? जल्दी कुआ. So यूनिफॉर्म टीचिंग मेथड्स फॉर ऑल समस्तंग पाई समान शिक्षा व्यवस्था, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन एंड एक्सेसिबल रिसोर्सेस. डिफरेंट इंस्ट्रक्शन दबा और रिसोर्स को बढ़ाइबा. एक्सक्लूडिंग डाइवर्स लर्नर्स को एक्सक्लूड करिबा. स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन रूल्स ए दिटा तो हबो ही नहीं. बट कौन आमर क्लासरूम टा इनक्लूसिव क्लासरूम टा कौन रिक्वायर करे? यूनिफॉर्म टीचिंग मेथड्स फॉर ऑल, differentiated instruction and accessible resources. Actually inclusive classroom कौन require करे तुमको लगुची? आंसर यूनिफॉर्म टीचिंग मेथड फॉर ऑल सेटा तो हुए इनक्लूसिव क्लासरूम रे. ओके, बट कौन टा दरकार करे ना डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन आउ एक्सेसिबल रिसोर्सेस. कहीं ना बहुत प्रकार पिला थांती कोठी इनक्लूसिव एजुकेशन ने, इनक्लूसिव आमर एनवायरनमेंट क्लासरूम रे. सो तांको पाई आमर इंस्ट्रक्शन डिफरेंट हबा उचित. ओके, एंड बहुत गुड़ा रिसोर्स आवश्यकता अछि. गोटे रिसोर्स रे जदि गोटे ब्लाइंड पिला न हो गोटे आमर अल्प शुणा जाउथबो. ठीक अछि, ताकू गोटे इनक्लूसिव एजुकेशन इनक्लूसिव एनवायरनमेंट क्लासरूम रे जदि बसा जिवो ताहले सी तो शुणी पारिबनी, अधा शुणिबो अधा शुणी पारिबनी. तो ता पई सेमती गोटे स्पेशल किछि रिसोर्स थिबा दरकार. ठीक अछि. सो आंसर इज बी. Which method combines group and individual work? Lecture method, project method, mixed method and demonstration method. So combines group individual work. Here the word has written combines. So here mixed method is combined group plus self learning. So the correct answer is C. The correct answer is C. AV aids should be, audio visual aids should be what? Irrelevant to the topic, age appropriate and accessible, expensive only, used only for exams. Audio visual aids should be irrelevant to the topic, no, age appropriate and accessible, yes. This is the correct answer. Expensive only, used only for exam, no. The correct answer is B. Self-learning encourages dash. Self-learning encourages dependency on teachers,
independent thinking and responsibility, reduced syllabus coverage, group conflicts. जल्दी कुह. Self learning encourages independent thinking and responsibility. आमर स्वाधीन भाव में आम चिंता करवा आउ तार दायित्व नबा. सेल्फ लर्निंग एनकरेजेस. ओके, सो द करेक्ट आंसर इज बी. व्हिच इज एन एग्जांपल ऑफ कंटेक्चुअल टीचिंग. आ भितरु कोटा कंटेक्चुअल टीचिंग रो एग्जांपल. टीचिंग मैथ यूजिंग रियल लाइफ मार्केट एंड रियल लाइफ मार्केट प्रॉब्लम्स, रोट मेमोराइजेशन ऑफ फॉर्मूलाज, ignoring and student questions, using only theoretical examples. So the correct answer is what? No, A. Teaching math using real life market problems. Real life market problem को नेकी math पढ़िबा एटा होची contextual teaching रे जिवो. So the correct answer is A. Diverse activities in a class help. Diverse activities in a class help maintain monotony, engage learners with different preferences, increase teacher worked only, reduced assessment needs. So the correct answer is engage learning with different preference, because diverse activities different means different kind of activities. गोटे क्लास रे कौन हेल्प करे ना एंगेज लर्नर्स विथ डिफरेंट प्रिफरेंस. इंक्लूसिव एजुकेशन इंटीग्रेट्स डैश. इंक्लूसिव एजुकेशन इंटीग्रेट्स ओनली गिफ्टेड स्टूडेंट, स्टूडेंट विथ वेरिड एबिलिटीज एंड नीड्स, सिंगल जेंडर क्लासेस, एक्सक्लूसिव करिकुला. सो द करेक्ट आंसर इज बी. Students with varied abilities and needs. Inclusive education integrates students with varied abilities and needs. Very good. B. TLMs can be what? Only digital, only physical objects, both physical and digital resources, none of the above. So, kuha pila mane? Jasmine, tell. So both physical and digital resources. The correct answer is C. The correct answer is C. Very good. Group learning fosters dash. Group learning fosters isolation, collaboration and peer teaching, competition only, teacher dominance. ग्रुप लर्निंग कौन फोस्टर करे ना कोलाबोरेशन एंड पीयर टीचिंग. आंसर इज कोलाबोरेशन एंड पीयर टीचिंग. सहयोगिता भाव में पढ़ा आ सांग मान सहित पढ़ा. ओके, ग्रुप लर्निंग ताकू फोस्टर करे. सो द करेक्ट आंसर इज बी. व्हिच इज एसेंशियल फॉर इंक्लूसिव लेसन प्लानिंग. आमर इंक्लूसिव लेसन प्लानिंग रे कौन एसेंशियल अच्छी? कौन एसेंशियल अच्छी पिला माने? यूनिफॉर्म टास्क फॉर ऑल, यूनिफॉर्म टास्क फॉर ऑल, डिफरेंशिएटेड टास्क एंड अकोमोडेशन, इग्नोरिंग स्पेशल नीड्स, सिंगल टीचिंग मेथड. सो आमर डिफरेंशिएटेड टास्क एंड अकोमोडेशन हो कौन करेक्ट आंसर. कहीं ना इनक्लूसिव लेसन प्लानिंग जिते बड़े गोटे टीचर लेसन प्लान टा करिबो कौन एसेंशियल ना समस्त को भिन्न भिन्न टास्क दब सी टीचर. आउ आकोमोडेशन पिला जमती आकोमोडेट हेबे से परिस्थिति सहित खाप खुआई चलिबे ताकू कौन करिवे देखिबा आवश्यकता अछि गोटे टीचर. सो आंसर इज बी. AV aids improve. आमर ऑडियो विजुअल एड्स कौन इम्प्रूव करे? ओनली विजुअल लर्निंग एंड ओनली ऑडिटरी लर्निंग, बोथ विजुअल एंड ऑडिटरी लर्निंग, नॉन ऑफ द एबव. सो द करेक्ट आंसर इज सी. बोथ विजुअल एंड ऑडिटरी लर्निंग AV एड्स एटा आगुर भी करथिला. ठीक अछि. सी. कंटेक्चुअल लर्निंग कनेक्ट्स. कंटेक्चुअल लर्निंग कौन कनेक्ट करे? थ्योरी विथ रियल लाइफ,
subject with unrelated topics, student with teachers only, exam with punishment. जल्दी कुह, I am waiting. So theory with real life. What? Theory with real life. आ पूर्वरु आम गोटे एग्जांपल नेलु मैथ पढ़िबा केमती ना मार्केट रिलेशन को नेकी. ओके, मार्केट को जिबा जा जा मार्केट लाइफ को नेकी आमे मैथ पढ़िबा. सो रियल लाइफ सिचुएशन को नेकी लर्निंग जते बेले हबो सेटा कोन होई जिवो कॉन्टेक्सचुअल लर्निंग. कोन हबो कॉन्टेक्सचुअल लर्निंग. सो आंसर इज ए. Self learning modules are useful for what? Amara self learning modules useful for slow learners only, all learners needing autonomy, teachers only, group assessment. Amara answer is kono self learning modules are useful for eta to habani ग्रुप आसेसमेंट नुहे. सो ऑल लर्नर्स नीडिंग ऑटोनॉमी. पिला जहाँ चाहिए स्वयं शासित भाव स्वयं चालित भाव सो सी तार पढ़िबो. तो सेल्फ लर्निंग मॉड्यूल्स आर यूजफुल फॉर ऑल लर्नर्स नीडिंग ऑटोनॉमी. व्हिच स्ट्रेटेजी एड्रेसेस क्लासरूम डाइवर्सिटी? आ भितरु को स्ट्रेटेजीटा क्लासरूम डाइवर्सिटी को एड्रेस करे? सिंगल मेथड टीचिंग, mixed method and inclusive practice, ignoring learner differences, strict textbook adherence. So answer is addresses classroom diversity माने mixed method कही first ru different teaching styles and inclusive practices. Okay, the classroom became inclusive classroom in addressing classroom diversity. Okay, the correct answer is B. TLMs should be what? Unrelated to objectives, aligned with learning objectives, expensive, hidden from student. Okay, TLMs should be aligned with learning objectives. Every lesson has a learning objectives. Okay, every lesson has a learning objective. So aligned with learning objectives is TLM should be. TLM एमिति हेबा उचित जेमति कि सेटा हमर लर्निंग ऑब्जेक्टिव सहित परस्पर जड़ित होई कि थिबो. सो आंसर इज बी. Inclusive education requires teachers to dash segregate student, adapt curriculum and environment, focus only exam, ignore disabilities. So inclusive education requires teachers to adapt curriculum and environment. Answer is B. Answer is B. Adapt curriculum and environment. Group activities help develop individualism only, social and communication skill, isolation, competition. So answer is B. Social and communication skills. Group activities help develop social and communication skill. हमर ग्रुप एक्टिविटीज टा डेवलप करे कौन ना सोशल एंड कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करे. सो आंसर इज बी. व्हिच इज ए बेनिफिट ऑफ यूजिंग AV एड्स? आ भितरु कोटा ऑडियो विजुअल एड्स रो गोटे बेनिफिट? डिक्रीज्ड एंगेजमेंट, enhanced understanding of concept, increased paperwork, limited accessibility. So the correct answer is what? B. Very good. So enhanced understanding of concept. आमे आम concept को केमती बढ़ाइबा, that is the benefit of AV aids. Okay. Contextual teaching improves dash. Contextual teaching improves only grades, relevance and application of knowledge, teacher salary, classroom size. So the correct answer is what? Improve करे relevance and application of knowledge. आमर
नॉलेज रो एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज को किए बढ़ाए ना कॉन्टेक्चुअल टीचिंग. द करेक्ट आंसर इज बी. इन इंक्लूसिव सेटिंग्स असेसमेंट शुड बी डैश. असेसमेंट किपरि हेबा उचित ना यूनिफॉर्म फॉर ऑल, डिफरेंशिएटेड एंड फ्लेक्सिबल, इग्नोर्ड, हार्श. सो द करेक्ट आंसर इज असेसमेंट केमती हेबा उचित, फ्लेक्सिबल हेबा उचित आ डिफरेंशिएटेड विभिन्न प्रकार हमर असेसमेंट हेबा उचित आउ सेटा फ्लेक्सिबल समस्त को सुहाइला भलिया हेतबो. ठीक अछि. सो द करेक्ट आंसर इज बी. Small groups are effective for dash. Large scale lectures, personalized discussion, ignoring shy student, reducing syllabus. Small groups are effective for personalized discussion. कौन ना personalized discussion. आमे आम निजर डिस्कशन को केते पर्सनालाइज करिवा सेटा होची हमर स्मॉल ग्रुप रो बेनिफिट. सो करेक्ट आंसर इज बी. Which TLM is digital? आ भितरु को TLM टा डिजिटल अटे? चैट, मॉडल, ई वीडियो, ब्लैकबोर्ड. सो द करेक्ट आंसर इज ई वीडियो. व्हाट? ई वीडियो. हमर गोटे ई रिसोर्सेस अछि समती ई वीडियो ता हमर कोन डिजिटल. चैट तो डिजिटल नुहे, मॉडल भी नुहे, ब्लैकबोर्ड भी नुहे. ई वीडियो टा डिजिटल. सी. Learner context includes dash. Learner context includes only academic performance, social, cultural and economic background, teachers preference, school location only. So learner context रे हमरा आसी जीवो social, cultural and economic background. पिलार social background, cultural background आउ economical background को नेकी हमरा learner context include करे. The correct answer is B. In inclusive classrooms promote dash. Inclusive classroom कौन promote करे? Exclusion, equity and participation, discrimination, segregation. Yes. So inclusive classroom promote करे equity and participation. प्रत्येक पिला participate हबा उचित. Okay, everyone needs to be participate in the classroom. That is a objective of inclusive classroom. So the correct answer is B. Self learning resources can be what? Only textbook, online modules, worksheet, ebooks, only teacher notes, none of the above. So self learning resources can be आमर ऑनलाइन मॉड्यूल्स गोटे पिला जब सेल्फ लर्निंग करिबो से ताले निजे निजे वर्कशीट बनेबो, ई बुक्स आमर इंटरनेट को फॉलो करिबो एंड ऑनलाइन मॉड्यूल्स किछि ऑनलाइन मॉड्यूल्स बनेबो. सो द करेक्ट आंसर इज व्हाट? द करेक्ट आंसर इज बी. Using varied activities prevents student boredom, teacher fatigue and curriculum overload, assessment error. So आम varied activities करबा से का को प्रिवेंट करे ना स्टूडेंट बोर्डम. स्टूडेंट केमती हमर बोर न हेबे सेइथि पई हमर कोन हुए ना varied activity रो यूज हुए. ओके, the correct answer is A. AV ads must be dash. AV ads must be loud and confusing, clear and relevant, unrelated to topics, expensive. AV ads must be, audiovisual ads must be what? Clear and relevant. पिला को शुणा गले तो सी पढ़िबो, ठीक अछि. एंड रेलिवेंट परस्पर रेलिवेंट हबा उचित. ओके, एवी एड्स मस्ट बी रेलिवेंट. आंसर इज बी. Contextual learning requires ignoring real life, linking content to students' experience, using foreign examples only,
टेक्स्ट बुक सेंट्रिक टीचिंग जल्दी कह कंटेक्चुअल लर्निंग कौन रिक्वायर करे ना आंसर इज बी वेरी गुड बी ला लिंकिंग कंटेंट टू स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस आमर स्टूडेंट कर एक्सपीरियंस कहले रियल लाइफ को नहीं जो टीचिंग टा ताको कंटेक्चुअल टीचिंग को आजिबो सो आंसर ही जब कौन ना बी inclusive teaching adapts dash only physical environment instruction assessment and environment curriculum only teacher style only so inclusive teaching adapt करे कौन ना instruction assessment and environment आमर आंसर हो जिवो बी आंसर कौन हो जिवो बी हो जिवो ग्रुप लर्निंग इम्प्रूव्स डैश ग्रुप लर्निंग कौन इम्प्रूव्स करे ना इंडिविजुअल स्कोर्स ओनली कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग टीचर्स अथॉरिटी कंपटीशन ऑब्वियसली ग्रुप लर्निंग आमर कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग आमर समूह भाव में गोटे प्रॉब्लम को जदि सॉल्व करवा सेटा ग्रुप लर्निंग इम्प्रूव करे ना सो आंसर इज बी TLMs enhance dash TLM कौन enhance करे only reading skill multisensory learning writing only listening only so the correct answer is multisensory learning कौन multisensory learning आमर TLM enhance करे multisensory learning को enhance करे answer is B The primary purpose of using TLMs in diverse classroom is to replace teacher, to cater to varied learning style and needs, to increase lesson time, to simplify the curriculum. The primary purpose of using TLM in diverse classroom is to cater varied learning style and needs. मैं पूर्वर कहली ठीक अच्छे प्राइमरी पर्पज होची टू कैटर वेरिएड लर्निंग स्टाइल एंड नीड्स आंसर इज बी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ways describes learner centric approach in diversity management नमस्कार teach Aparna so teacher decides everything focus on individual learners' interests and abilities, uniform instruction for all, ignoring student backgrounds. The correct answer is what? Na? Teacher-centric approach in diversity management. Amar learner-centric approach diversity management रा base describe कौन हबो? ना? आंसर कौन हो तुम फोकस ऑन इंडिविजुअल लर्नर्स इंटरेस्ट एंड एबिलिटी आमे प्रत्येक शिशुर कौन कौन इंटरेस्ट अच्छी ठीक अच्छे ताकू नहीं पाठ करवा आ एबिलिटी को देखा सो आंसर इज बी इन इनक्लूसिव एजुकेशन असेसमेंट शुड बी डैश आमर असेसमेंटा केमिति हवा उचित स्टैंडर्डाइज्ड फॉर ऑल फ्लेक्सिबल एंड इंडिविजुअलाइज्ड ignored for special needs student only summative so correct answer कौन ना flexible and invisualized आमर invisualized और flexible हवा उचित assessment टा ठीक अच्छे समस्तंक पाई समान आउ that is flexible and individualized means each one is different in assessment so इनक्लूसिव एजुकेशन ने आमर असेसमेंटा एहिपरि हबा उचित यूजिंग कंटेक्स्ट ऑफ द लर्नर हेल्प्स इन डैश आमर मार्किंग लेसन इररेलेवेंट एनहांसिंग मीनिंग एंड एंगेजमेंट इंक्रीजिंग टीचर वर्कलोड रिड्यूसिंग सिलेबस कवरेज आमर आंसर हो एनहांसिंग मीनिंग एंड एंगेजमेंट ठीक अच्छे यूजिंग कंटेक्स्ट ऑफ द लर्नर हेल्प्स इन आमर context of the learner help कोथरे करिवो ना enhancing meaning and engagement answer is B which activity is most suitable for mixed ability groups individual reading collaborative project with role differentiation teacher led lecture only silent reading the correct answer is what
आमर मिक्स्ड एबिलिटी ग्रुप रो एक्टिविटीटा कोटा ना collaborative project with role differentiation. Different students have different role, so he needs to do collaborative project with role differentiation. Answer is B. AV aids are most effective when they are dash. Audiovisual aids are most effective when they are unrelated to the lesson, relevant, clear and accessible, expensive and complex, used only for exam. आमर AV aids टा most effective हो जिते बेले सेटा relevant, clear and accessible हो. ठीक अच्छे. Answer is B. Self-learning modules promote dash. Dependency on teacher, autonomous skill development, reduced curriculum coverage, group conflicts. हमरा सेल्फ लर्निंग मॉड्यूल्स टा प्रमोट करे कौन ना ऑटोनोमस स्किल डेवलपमेंट पिलार निजर स्किल टा डेवलप हबो. ठीक अछि सेटा सेल्फ लर्निंग रो प्रमोट करे. Inclusive teaching requires adapting dash. Adapting only physical facility, instruction, assessment and environment, curriculum only, teacher's personal style. So answer is what? B. Instruction, assessment and environment. Inclusive teaching requires adapting instruction, assessment and environment. Which TLM is best for kinesthetic learner? Audio recording, models and hands-on materials, textbook only, video without interaction. आमर काइनेस्थेटिक लर्नर कर कौन कौन बेस्ट TLM हम आमर काइनेस्थेटिक रे आमर डांस आसीजिवो. ठीक अछि आउ जुम्बा एगुड़ा सब आसीजिवो लर्नर माने. सो व्हिच मेथड तांका पई बेटर बेस्ट मॉडल एंड हैंड्स ऑन मटेरियल तांका पई आमर मॉडल आउ हैंड्स ऑन मटेरियल टा बेसी बेनिफिट रहिबो. Contextual learning improves dash. Only memorization, application and retention of knowledge, teacher's authority, classroom discipline. आमर एटा पढ़िथिली application and retention of knowledge is the correct answer. B. Group learning in diverse classroom helps. आमर गोटे डाइवर्स क्लासरूम नहीं जदि आम ग्रुप लर्निंग करूचे ताले सेटा आइसोलेट स्टूडेंट, बिल्ड कोलाबोरेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल, इंक्रीज कंपटीशन ओनली, रिड्यूस टीचर इन्वॉल्वमेंट. सो आंसर इज बी. बिल्ड कोलाबोरेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल. आमर कोलाबोरेशन को सी बिल्ड करिबो आ कम्युनिकेशन स्किल को एनहांस करिबो किए ना ग्रुप लर्निंग. आंसर इज बी. Which assessment method fits inclusive education? Single uniform test, differentiated and continuous assessment, ignoring special needs, only summative exam. So answer is B. Differentiated instruction and continuous assessment दरकार गोटे inclusive education रे ए मेथड टा यूज हवा उचित. ठीक अछि. So the correct answer is B. Using varied activities in teaching sources, monotony, engagement of diverse learning preference, increase teacher workload only, reduce syllabus coverage. आमर क्वेश्चन पढ़िबो भल से यूजिंग वेरिड एक्टिविटीज इन टीचिंग रिसोर्सेस. टीचिंग रिसोर्सेस यूज करिवार मोटो कोन ना एंगेजमेंट ऑफ डाइवर्स लर्निंग प्रिफरेंस. प्रत्येक डाइवर्स लर्निंग, डिफरेंट लर्निंग स्टाइल, स्किल्स, एबिलिटीज, कल्चर ओके ऑफ द स्टूडेंट, नीड्स ऑफ द स्टूडेंट माध्यम रे ताको एंगेज करके रखिबा. सो आंसर इज बी. The context of the learner includes dash. Only academic score, social, cultural and economic background, teacher's preference, school location only. The context of the learner include amara social, cultural and economic background. Answer is B. Answer is what? B. Inclusive classroom focus on dash.
ଆମର exclusion of diverse learner, providing equitable opportunities and participation, segregation, elite education. जल्दी कुह. हाँ, B, very good. The correct answer is B, providing equitable opportunities and participation. समस्तंग पाई opportunity और participation रहिबा उचित. सो एठी हमर एमसीक्यू डिस्कशन आज पाई सरीला. सो थैंक यू एवरीवन. बाय बाय. हैव ए नाइस डे. ओके.